going to be typing. So we have that much more time for us to talk or whatever, Now I was thinking actually what do we talk about today? The thought that came to me instantaneously was that I suppose all of us, most of us here or all of us here who are there are married and seniors, of course, which means they would have had the opportunity to meet the spouse for the first time sometime. So I thought, why not share with each other as to how it happened and how did we meet our respective spouses for the first time. So I would love to hear from the senior most here, Prakash Singh, whose family I have met. तो अगर आप बताएंगे ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, एंड निकाह शादी कब हुई वगैरह वगैरह, it will be interesting. I hope it's not too, if it is too personal, please feel free to say that I don't want to talk about it. Fair enough. That is acceptable. But I just thought it could be kind of good to recall what happened so many years ago. Let me go inside. My son is there. Let me have a little privacy with. Oh, बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल. Yes, sir. पहली मुलाकात सर ऐसे थी कि my auntie used to stay someplace. उसके सामने ही नवजीवन सोसाइटी है. You must have been knowing चेंबूर में नवजीवन सोसाइटी है. Yeah, नवजीवन. So my in-laws used to stay over there. तो जब बालकनी में मैडम आती थी तो नैन से नैन मिले पहली मुलाकात में. तो I don't know what happened. It was just love at first sight, क्या बात है. No, नहीं बात, नहीं क्या, नहीं कुछ, नहीं ये. But somehow we became very friendly. After that, she was sent to Jodhpur for 5 years. We never met. Which year was this? The first meeting was in India? I think I passed my SSC in 65 and it was in 66, 67. Wow, 16-17 साल में. Wow. And then somehow somebody said that it is not possible for you to marry this girl. And I had one thing in my mind that if I marry, I'll marry only her, otherwise I'll not get married only. Wow. So, and some people who saw my hand and all, they said you have got a very strong intuition, you see. And आपके इसमें कुछ नहीं भी लिखा होगा और आप अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाओगे तो आप कर लोगे वो. आपको कोई ये लिखा हुआ ये सब काम में नहीं आएगा. And by touchwood, as soon as she became 18 years, we got married. We got married with quite a big opposition from my in-laws. But one of my brother-in-law, he was a very senior one. He took initiate and got married. And I remember my grandmother used to say after that I have got 7 sons, but the 8th son, Prakash Singh, is my dearest one. अरे वाह, क्या बात है. You turned the tables around, huh? Yes. That would. Then everything I used to travel for all UP, MP and all. Then I got my first child, Darshan. You also met her. Yes. She came from Delhi. And so as soon as she was born, I was not interested in going for traveling anymore. So I thought of staying at Bombay, not knowing even E of electricals. I started electrical business with some chokes and all. I used to have a sidecar scooter. I used to fill it up sidecar and used to supply from Chembur to Thana and Kalyan also. Oh wow. And then God gave me, I don't know, कुछ ऐसी अगले जन्मों के कर्म होते हैं ना. मैं कुछ किए इस टाइम में कहूँ कि मैंने कुछ किया, not possible. I have not done anything. और कुछ लिखे हुए ऐसे थे कि हर चीज पे मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. Okay. भगवान ने ऐसे हाथ दे के ऊपर ही उठाते गए.
I used to work at Calcutta Confectionery Works, where you know fruity and all. Yeah. 600 रुपए पगार होता था और 1500 रुपए मैं तब कमीशन लेता था, तो समझता था बहुत आई एम वेरी Well to do. comfortable and all. And my father used to be in police, so he retired. And after his retirement, I said, "You don't have to do anything. I'll manage everything." And by the way, ऐसे ही काम बढ़ता गया. Then at Takwadi, opposite Edward Cinema, I got a very small 8x8 office. Ah. And I used to manufacture these plastic wires, flexible wires from Delhi, and Okay. used to sell at Bombay. Edward Cinema is very close to Metro Cinema, right? Yes. Just opposite that only, where Kalba Devi ends. Yes. Kalba Devi के सामने एकदम टाकवाड़ी is a very small गली. उसमें दूसरी गली में चौथी बिल्डिंग में 8वां रूम में लेके और धंधा चालू किया था with only 500 in my hand. और वहां से मैं सारी बॉम्बे को सप्लाई करता था, फ्लेक्सिबल वायर एंड ऑल. एंड आफ्टर दैट नाउ यू नो माय शॉप एट लोहारचाल. जब मैं शॉप ले रहा था तब भी ऐसे ही हुआ कि भाई अभी बहुत टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए टाकवाड़ी में, अब कुछ करना चाहिए. तो अरदास की, और अरदास ऐसी सुनी गुरु बाबा ने कि यहाँ पे भी मेरे जेब में कुछ नहीं था और मैं 10 लाख और 52,000 में मैं ये दुकान ली है, जो कि एट प्रेजेंट इट मे बी वॉट एवर इट इज. एंड माय चिल्ड्रन मंजीत तो अब बड़ा हुआ है और मेरे को ज्वाइन किया है. I worked a lot, but सबसे ज्यादा ना graces of God was there. ऊपर हाथ मेरे ऊपर था उसका, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात करता था, मुझसे कुछ नहीं होएगा, जो करना है तू नहीं करना है. और वो आगे बढ़ के मुझे कराता था. I don't know. मैं इससे जास्ती. You're blessed. बस हमेशा ऊपर वाले की मेहरबानी. Yes, he has been with me always. And seniors के आशीर्वाद, इसी से तो हम जो भी हैं वो हैं. Yes sir. So heartening. I have the privilege of meeting your family. बहुत ही अच्छा लगा. Thank you. So very good. And I say continue करो. Let the next generations also. और yes. और सर मुझे बचपन से लेकर है ना पैसे की भूख रहती नहीं थी. नेवर. मैं कभी पैसे के पीछे नहीं पड़ता था. नेवर. आज तक भी मैं ऐसे रहता हूँ कि नहीं, मनी इज नथिंग फॉर मी. व्हेन आई से मनी इज नथिंग फॉर मी, समटाइम्स माय वाइफ फाइट्स विद मी. व्हाई यू से लाइक दिस? व्हाई यू से लाइक दिस? मनी इज समथिंग. यू सी, यू मे से नथिंग, नॉट एवरीथिंग, बट इट इज समथिंग. मैं तो जितना जरूरत है उससे जास्ती दे रहा है, उसके बाद मेरे को मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है. सही. अच्छे दोनों बच्चों की इतनी अच्छी शादी की मैंने, जो कि सब इतने पहचानते भी नहीं थे मुझे. प्रकाश सिंह. एंड आवर कम्युनिटी ऑफ सिंधी सिख इज वेरी स्मॉल. बहुत कम सिंधी सिख. पीपल ओनली नो दैट सरदारजीज आर ऑल पंजाबीज, बट देयर आर मेनी सिंधी सरदारजीज एंड कम्युनिटी इज सो स्मॉल. एंड आफ्टर माय चिल्ड्रंस मैरिजेस एंड ऑल, एवरीवन नाउ आई एम रनिंग सिंधी सिख संगत ग्रुप. एक हमारा ये कम्युनिटी का पंचायत है जिसका कि मैं ही संभालता हूँ. एवरीबडी नोज मी फ्रॉम ऑल ओवर, इन नॉट ओनली इंडिया, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आल्सो, जहाँ पे भी सिंधी सरदार रहते हैं. दे ऑल नो प्रकाश सिंह फ्रॉम चेंबूर. तो ये सब उसकी मेहर है. मेरी कोई इसमें ये नहीं. मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया है. ग्रेट वैल्यूज जी. पैसे, ये तो डिबेटेबल थिंग है. पैसा कुछ नहीं है ऐसे बात भी नहीं है. पैसे का भी अपना जगह है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है. तो वी कैन बी लिटिल दैट. एट द सेम टाइम ओवरडू भी करना नहीं चाहिए. देन बैलेंसिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे. सही बात है. आपको हमने बहुत इमोशनल कर दिया. ये तो हमारा इरादा नहीं था. पर आई थिंक अभी कितने साल हुए जी आपकी शादी के? सर अभी 11 तारीख को मैंने 51st एनिवर्सरी मनाई है. 11 जुलाई. अच्छा, 51. या लास्ट ईयर बच्चों ने हमारी गोल्डन एनिवर्सरी मनाई थी बहुत धूमधाम से. पता नहीं सारा रूम सजाया था. आई डोंट नो
मैं गया तो वहाँ पे बलून लगे हुए थे, केक बना था, ये था. Wonderful, And wonderful. this 11th July was my 51st anniversary. Chalo, And I'm lucky to have my better half better than me also. we wish this continues and then you hit a century, sir. हम लोग भी देखने को रहेंगे तब. Thank you, sir. Thank you उम्र so much. सर उम्र बड़ी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी होनी अच्छी बड़ी होनी जरूरी नहीं है. बराबर है, अच्छी होनी चाहिए. That is the most important aspect. Yeah. Thank you very much for sharing a flashback and then up to अभी तो अच्छा लगा सुन के. Okay, who will volunteer to talk next, because I think Sita must be on her way to work. So will you be able to? I have my summer vacation. I'm not at work. I'm relaxing. Okay, so. But you can still be the next. कुछ खास नहीं है sir. Nothing interesting. It was a routine. Yeah, parents chose, and then I got married, and then life goes on. एकदम फ्लैट कर दिया आपने तो. फ्लैट तो है सर, वही तो जो है वही बताओ. Nothing interesting, and मतलब nothing different. Like it's a routine. I thought you will build up something and then make it interesting to say that how it happened. I can sound interesting by saying that nothing went wrong. So fine. So that is the interesting part. So it's still going on. I think it's 36 years now. Wow. 36, 37 years since I'm married, and it's still on. And children are all there with us, and then that's the best part. And whatever we celebrate, whether anniversary, birthdays, or anything, we celebrate it together. Wonderful. No, but I'm still interested to know the first meet. There was no first meet. It was in the engagement. There was no first meet. He came to see me, and then. No, that is the first meet, no? When he came to see you, Ponpakal, that is the first meet. That's it. Yeah, they asked me, "Do you have any questions?" They kept asking me questions. Then I kept. They asked me to sing, and I sang, like any other boring, ritual. Yeah, it was ritual. It was more of a ritual than a meeting. And then they asked me to sing. I sang something on Lord Subramaniam. I believe his sister loves Lord Subramaniam. She had a big say in marriage. She said yes because she sang about Subramaniam. It's very ominous. So you had already done some homework to find out that what his sister. No, I didn't. That was an accident actually. What happened? That's why. I didn't do any homework. Like I was in the midst of my exams, so I wasn't even prepared for that kind of a meeting. And then I was studying. My mother said, no, come. They are coming to see you. I said, why are you distracting me? She said, no, because he's going away. He's leaving town. So you have to come and see him. Yes, Zindagi Ittifaq hai sir. Yes, I agree with you. So yeah, I mean, they just left, but they asked me to sing and I sang. They said, you sing well. And that's it. Okay. So what now? I have to go back to my studies. And next day I had my MA exams. So you can imagine what frame of mind I would have been. That's it. And the one question they said, do you have any questions? Then I said, yes. Can I study after marriage? So I would love to say that. The only question is, I want to study after marriage. I want to continue studying. So is it okay with you? They said, yes, of course, no problem. This is not very common. So both did Nokia. Oh yes, Nokia. It was Nokia. I didn't Nokia, he Nokia probably. Nokified, yeah. So yeah, I said I want to study after marriage. That was my only condition. And he said yes. And after 10 years, after 20 years, I was still studying. He says, I regret saying yes then. You're still, I didn't know I was committing myself to 20 years and 30 years. I thought you will finish your MA and stop. I never gave up. I never gave up studying. Wow. Academics were the other side of my personality, I would feel. I still feel. So I'm a lifelong learner and my academics will stay with me as long as I am there on earth. Okay. The day my academics die, the day I'm academically dead, I'm physically dead too. Bapre, that is a huge statement. Yes. The day academically I'm not able to do anything, then that day, that's it.
That's it. Hmm. That's how I look at it. Luckily, that does not apply to me. Otherwise, I would have been dead and gone long back. Academics and me are way away from each other. No, I don't mean anybody else. It may be an obsession, but that is what I am. This Even is today. great. No, good to know that. It's excellent. I mean, continuing to study and having that tenacity and penchant to continue to, Gyan Pipasa, as they say, it's something amazing. Gyan Pipa, yes. Gyan Pipas, I can say. Yeah, that's amazing. I mean, Pipas, and I always learn from somewhere, and I always find it exhilarating to attend webinars, and anything to do with academics really exhilarates me. I'm fully into research. I keep doing some work, research work. Although my publications are not very active for the past 2-3 years with a shift. But yes, I'm completely into academics. Research. I don't know if I shared. I have written around 4 single-authored books, and I have contributed around 7 book chapters in a series, edited series, and around 25 research articles in leading journals, academic journals, and I'm on the editorial board of 3 of the international journals on language and linguistics and culture. My God. I'm also one of the associate editors of one of the Asian journals, East Asian journals. Okay. So that's a huge achievement. And research, what do you research on? Speech problems, pronunciation problems, because I'm into linguistics and phonetics. Okay. So mother tongue influence was one, because I was working in the Middle East. A lot of the pronunciation problems that the Arabic speaking people had actually pushed me into that, and then many of my papers generated from that. So learning problems, pronunciation problems, and then the speciality of mother tongue, how much mother tongue influences learning English, focus more on English learning, because I'm into ESL. And then how you can use, like one of those papers, I did share it, I guess, earlier on, that how you emote the language in your daily life. How do you emote language, and how music can influence. Emoting language is change in pitch. So change in happens when you emote language, and then change in pitch also happens when you sing. If you know, there is one pivotal note in Carnatic classical music, which is ma. It's the central note out of the 7. You have sa, re, ga, and ma, pa, dha, ni. So if you can take that as a pivotal note, and then check, there are 2 kinds of mas: decisive mas, pratimadhyama and shuddha madhyama. Yeah. So depending on, I took up Tamil data as for speech and ma for music. So I related somewhere that they have to match. Speech and music are different forms of different expressions of communication. One is without verbal, non-verbal, one is verbal, if you can call it instrumental. So looking at it, knowing whether you use more often when you give out emotional speech, whether you use pratimadhyama or shuddhamadhyama, measuring the frequencies. So do you use more of pratimadhyama or shuddhamadhyama? Then bring it down to the fundamental frequency, which is the base pitch, adhara shruti. So if you know your adhara sa, it's easier to take off at any given point of time without checking your pitch level. Okay. Yeah, so it helps in that sense for those who are coming up but non-trained singers, or those who are amateur singers like me. It really helps when you have to suddenly, spontaneity. Okay, this is my shruti. This is the highest note in the song, and this is my adhar shruti. So this is, it becomes easier to take off with any song. So I wrote one of those papers on this. So this is where, this is my research. This is my research, and goes on and on. Learning problems, and then pronunciation problems, corrective measures, and how relate a lot to
my mother tongue, which is Tamil. So I have related it to the mother tongue, yes. Okay. Yeah. So he supports me fully. He supports me fully. He says it's not usual. It's not very usual that people give up normally when they have responsibilities and stuff. They give up studying or research. Their academics take a backstage, but you haven't given up. So he's always been there. Very nice. He supports me fully. Yes. I have just one question. I mean, do you know Arabic? I understand Arabic, having lived in the Middle East for almost 9-10. Okay. I was teaching a group of students, not a group of students, groups of students for 10 years who couldn't speak English properly. So while I was teaching them English, they taught me Arabic better actually. So I ended up picking up a lot of Arabic. Yes, I do understand. It's just like, I had a driver who only knew Kannada, and I thought I was teaching him Kannada. I was learning Kannada from him, but he ended up learning Tamil from me. This happened with me, sir. Whenever I was in Aish, Mysore, for a conference, speech and hearing, I used to go around in autos, and I ended up improving my Kannada, I can say, talking to them. Nice. Poor drivers, they used to understand my Kannada, but I picked. Great. Thank you, Sita, for enlightening us. Thank you so much, sir. Nothing interesting, but yeah, I just thought I'd share. No, it's still interesting, definitely. It's only a different, slight expectation mismatch. That's it. I think Sudha Dave wanted to ask a question to you. She has raised her hand. Is that right, Sudha Dave ji? Yes, sir. Yes. Hanji, Yes, Sudha ji. Sita ji started saying, mine just routine only, but when I heard her biography, she's too good, like, wonderful. Thank you. Again, I'm one with Prakash ji, where the I part of it has to be removed. I didn't do anything. I was only an instrument. I was driven by some other power, a power beyond us. Otherwise, it wouldn't have been possible. Yes, I would only say I was. I wanted to do it, and then he took me along. Excellent. Thank you for the compliment. Thank you so much, Sudhaji. Oh, you're welcome, dear. So, Sudhaji, why don't you share yours now that you're already online? Sure. Yeah, my childhood was wonderful. Being the younger sibling, overpetted. And my brother had orchestra in Chennai. Oh. And I got married in Ahmedabad. So I'm a combination of dosa and dokla. Then of course I got married to a businessman. How did you meet for the first time? That is today's story is that, first meet. Yeah, actually one of my mommy, she was related to my husband, so she only introduced both of us, and we liked each other, and then we got settled, like. Triggered. And I was just like, North Pole and South Pole do not meet, they say, but in our case North Pole and South Pole met. Opposites attract. Opposite attracts, absolutely. Then I got only one daughter. She settled in US. She got married. My brother had orchestra in Chennai. He had. So recently, from I think 2015, he passed away. Oh. So that is the saddest part of my life. And whatever I am today, that's all because of him. He only made me sing. Okay. He was the one who took me to this pitch and all, like, to this place. Acha. So there was no formal girl singing ceremony because you were already introduced and you met. Yeah. We knew each other. Knew in the sense, though we had not met each other, seen. We were talking like, she used to talk about him. So that way we knew each other. So the background was created for the eventuality to happen. Yeah, absolutely. And how many years now? Now 38 years. Okay. It's really good to know that, this is something I found, especially in 91, 92, when I was in the US, we only heard people separating there, divorces were so common. Now it has become here also.
But the good thing was the place I was in Dallas. Dallas was more a family-oriented place. So a lot of people were married for 25 years, 30 years, which was very nice to hear those days. I'm talking True. early 90s, which is not Hmm. very common. Abhi to chodo. I mean, the life is different. We have got to start accepting the reality. True, true, true. Good. Thank you, Sudhaji. Thank you, sir. Welcome, sir. Dr. Sarlaji, how was your first meeting with your spouse? Please unmute yourself and unmute कीजिए. We can't hear you. Can you please unmute? On your screen on the left corner, there will be a mute button. Right. हेलो सभी को मेरा सादर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। आज का टॉपिक मुझे पता नहीं है सर तो आप पूछिए। सिर्फ अब बहुत इजी टॉपिक है। हेलो जी। आप आपकी पहली मुलाकात उनके साथ कैसी हुई और कब हुई और कितने साल हुए, कैसा रहा? पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? हाँ जी, आपने वो क्या थी, मैं जामनगर स्टडी कर रही थी BMS का और सेकंड ईयर में थी और क्या बोलते हैं उसको, पिताजी के पास आए उनके फ्रेंड और उनके दोनों फ्रेंड आए थे। मुझे हिंदी या इंग्लिश में उसका कि आपकी बेटी जो जामनगर BAMS कर रही है उसके लिए मैं मेरे छोटे भाई की बात लेके आया हूँ। अच्छा। तो मैं तो तीसरे नंबर की थी, मेरी बड़ी बहन का सगाई बाकी थी, लेकिन फिर भी पिताजी ने और दादी ने बोल दिया कि जब मैंने तो देखा भी नहीं था, हम मिले भी नहीं थे कभी, तो कि जब बड़ी बेटी की शादी तय होगी तब हम देखेंगे। और उसके बाद दीदी की सगाई तय हुई तो फिर मेरे पापा ने बोला कि डॉक्टर राजू तुम्हें, उनका MBBS कंप्लीट हो गया था और वो इंटर्नशिप कर रहे थे, शिवानंद हॉस्पिटल है वीरनगर आई हॉस्पिटल, कि तुमसे मिलने आएंगे। तो मिलने से पहले उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा मेरे ऊपर, मेरी हॉस्टल पर, कि डॉक्टर सरला जी मैं आपसे मिलने आऊंगा। और उन्होंने मुझे उसमें एक उल्लेख किया कि आप श्रीमा शारदा मणि का जीवन चरित्र पढ़िएगा। तो कौन शारदा मणि देवी, मैं भी मुझे पता नहीं था। और उसके बाद मैं तो बैठी थी ऐसे हॉस्टल के बारी में, तो मेरी सहेली साथ में थी, मैंने बारी से देखा कि 3 लड़के आ रहे हैं। तो मैंने मेरे जेठ जी को मैंने देखा था जो घर पर आया था, तो मैंने निर्मला को बोला कि निर्मला देखो वो राजू शायद आ रहे हैं। तो फिर वो वॉचमैन ने बुलाया गेस्ट रूम में कि डॉक्टर सरला राठौड़, तब मैं डॉक्टर नहीं बनी थी, सरला राठौड़ के गेस्ट आए हैं मिलने हैं। तो मैं गई और बस पहली बार वो गेस्ट रूम में ऐसे नमस्कार किया और बोले, और फिर उनके 2-3 जो फ्रेंड साथ में थे और मेरी 2-3 सहेलियां, हम सब ऐसे बैठे थे नॉर्मली, कोई ऐसा तो कोई मन में कोई चिंता भी नहीं थी और कोई विचार भी नहीं था कि कोई घबराहट भी नहीं थी। तो फिर सब बोले तो उसमें से उसी दिन बोला कि आपको कुछ हम सब लोग गाए कुछ ना कुछ, बस पहले दिन पहली मीटिंग शाम को 5 बजे के बाद। तो फिर बोला कि आप गाइए। तो मैंने एक गुजराती गजल है, गजल बोलते हैं या सुगम संगीत का, वो मैंने गाया। उसके बाद उनके एक मित्र थे जो वो भी मेडिकल में थे, जो शंकर के बहुत शिव जी के भक्त थे, उन्होंने ये शिव महिम स्तोत्र बड़ी बुलंद आवाज में बोला। और डॉक्टर साहब ने तू दयाल दीन हो तू दानी में भिखारी, वो एक भजन उन्होंने गाया। और उसके बाद उन्होंने मुझे वो श्रीमा शारदा मणि देवी का जीवन चरित्र बुक दी और बोला कि ये रामकृष्ण परमहंस देव के सहधर्मिणी श्रीमा शारदा मणि देवी है, और उनके ऊपर बस वो मुझे पढ़ाने आ गए मेरे गुरुजी बन के, उनके ऊपर आपको ये अखिल गुजरात निबंध स्पर्धा में निबंध की तैयारी करनी है। तो फिर वो बुक मुझे दी
और वो 4-5 या 5-6 दिन वो रुकने वाले थे अपने फ्रेंड के यहाँ हॉस्टल में, मेडिकल जो कॉलेज की थी उसमें। तो और दूसरे दिन शाम मैंने वो बुक में शुरुआत की, दूसरे दिन शाम को आए मिलने, और फिर हम गए ये हमारी हॉस्टल के पास, इससे बहुत अच्छी जगह है राजमहल के पास, गुरु दत्तात्रेय मंदिर। आपको मेरा ये लंबा लगेगा सर? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। हाँ हाँ। तो डॉक्टर वहीं पर गुरु दत्तात्रेय के मंदिर पर दर्शन करके वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने बुक खोली और पढ़ना शुरू किया, मुझे सुनाना शुरू किया। बस वहीं से मेरी ये शुरू हुई, मैं एक विद्यार्थिनी बन गई और वो मेरे गुरु। और हाँ वो लेकिन मैं मन ही मन तो मैं बहुत ऐसे क्या आघात में थी कि अरे ये कैसे ये मुझे क्या करना होगा उनको ये जीवन में। तो बिल्कुल अभी मेरा 17-16 साल कंप्लीट हुए थे, तो जैसे विद्यार्थिनी में आज्ञा की तो उसी तरह पढ़ती रही। वो बस कितने दिन आए मिलने तो वो बस पढ़ाई शाम को, और बाद में कहीं अच्छी जगह भजन चल रहे थे तो वहीं पर ले गए। तो हमारे पूरी कॉलेज के सामने वाले जो बॉयज हॉस्टल के लड़के बोल रहे थे कि अरे ये सरला तो गई अब। सबको, क्योंकि मेरा बहुत नाम था, मैं बहुत पार्टिसिपेंट सब में थी। तो उसके बाद उसमें मैंने जी लगा के वो बुक को पढ़ा जीवन चरित्र का, और मैंने निबंध भी लिखा, और उसके बाद निबंध लिख भी दिया। और मैंने पहली बार और तभी वो छुट्टियां शुरू हुई नवरात्रि के बाद की, तो मैं एक पत्र डाल के अपने निबंध को भी मैं पोस्ट कर दिया, और पत्र डाल के मैं अपने पिताजी के घर चली गई। उसमें मैंने अपना ये लिखा कि मैं तो एक बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ, आधुनिक युग की, बिल्कुल आधुनिक युग की हूँ। आपको अगर किसी ने फोर्स किया हो, क्योंकि आपके विचारों से मुझे लगता है कि आप सन्यासी बनने के लिए शायद ऐसा विचार हो, तो प्लीज आप बोल दीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत मन ही मन सोच में पड़ गई हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, जो लेटर लिखा वो भी मेरे पिताजी के हाथ में आया एड्रेस में। उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया और बोला कि डॉक्टर, उन्होंने पढ़ लिया था पत्र, बोला कि डॉक्टर राजू का पत्र आया है, तुम पढ़ लो। फिर पिताजी ने समझाया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दिल का है। और मेरे पत्र का जवाब भी उनको जो आया था उसमें लिखा था कि मैं मुझे अगर तुम ना कहोगी तो मुझे दुख तो बहुत होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा, हम उनके डीन थे सेन साहब थे बंगाली मेडिकल कॉलेज के, जो हमें बहुत प्यार करते थे, उनके कारण मेरी पहचान हुई थी। तो वो आंटी जी मुझे बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे जैसी लड़की मेरे बेटे के लिए ढूंढ दे, जो यूएस में थे, फाल्गुन भाई। तो डॉक्टर साहब ने लिखा था कि तो मैं तुम्हारी बात मिसिस सेन को करूंगा। फिर मुझे लगा कि इनको बहुत आघात पहुंचा है, मैंने लिख दिया कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और मुझे पूछा नहीं था किसी ने हाँ के ना का, लेकिन आपको इच्छा है तो मैं जैसे आपकी इच्छा है वैसे चलूंगी। और बाद में मैं अगली बार बोला था मैंने कि मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो और उस निबंध स्पर्धा में अखिल गुजरात उसमें मेरा सेकंड नंबर आया। रामकृष्ण मिशन में राजकोट में मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया कि आपका ये सेकंड नंबर आया है, आपको प्राइज लेने और 3 दिन वहाँ ठहरने बुलाया है। तो वहाँ का काका कालेकर साहब के हाथ से मुझे प्राइज मिलने वाला था। उस टाइम भी मैं तो जानती नहीं थी कि कहाँ रामकृष्ण मिशन के क्या आश्रम है। डॉक्टर साहब उनके मित्र के यहाँ में गई मेडिकल कॉलेज में, और हम दोनों बस में राजकोट गए। डॉक्टर साहब कोडिनार से राजकोट आए, और स्वामी जी जहाँ पर अध्यक्ष थे, स्वामी आत्मस्थानंद जी, जो नरेंद्र मोदी जी के गुरु जी थे, जिनका बहुत, हाँ अभी उनका ये शताब्दी की ये सेलिब्रेशन चल रहा है आत्मस्थानंद जी का, उनको सौंप दिया कि ये सरला है, इनको प्राइज मिला है और वो यहाँ पर रहेगी। वो चले गए। अब मुझे कहाँ ठहराना है, क्योंकि वो बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान से अनजान थे। फिर स्वामी जी ने बोला कि चलो
तुम्हें गेस्ट रूम में ठहराना है। अच्छा बोला, वो कहाँ गया राजू? तो मैंने बोला कि वो तो गेस्ट हाउस चले गए हैं बाहर जहाँ ठहरे हैं। और क्यों चले गए? मैंने बोला कि हमारी शादी नहीं हुई है। फिर उन्होंने मुझे एक जो प्रोफेसर थी वहाँ, जो भक्त थी आश्रम के डिवोटीज, उनके साथ भी तुम सरला के साथ रहो। और सुबह जब डॉक्टर मिलने आए तो आत्मस्थानंद जी महाराज ने उनके पीठ पर दब्बा लगा के बोला, बुद्धू डॉक्टर, तुम तो इसको छोड़ के चले गए थे, लेकिन सरल सरला है तो उसने सब बता दिया। बस अब यहाँ से मेरी ये जीवन यात्रा शुरू हो गई। बाकी तो जीवन में उतार चढ़ाव आया, लेकिन एक दूसरे को समझ कर। तो मेरी एक बेटी है, बेटा है। बेटा TCS में अच्छी पोस्ट पर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो अहमदाबाद रहता है, बेटी बड़ौदा रहती है। और हम यहाँ पर हमारा क्लिनिक चलाते हैं। और डॉक्टर साहब आज 40 साल उनकी प्रैक्टिस को हुआ है। वो 40 साल से सिर्फ 20 रुपये लेके मरीज का इलाज कर रहे हैं अभी तक। और पहली बार 20, बाकी 10 रुपये बस उसी में। और क्योंकि गुरुदेव ने उनको बोला था, हमारे गुरुदेव थे रामकृष्ण मिशन के परमाध्यक्ष तो स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, जो श्रीमान शारदामणि देवी के डायरेक्ट डिसाइपल थे। अच्छा। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला था कि तुम अपने मरीजों, दर्दियों में, हम गुजराती में दर्दी बोलते हैं, मरीजों में, दरिद्र में नारायण का दर्शन करके ही तुम्हें सेवा करनी है। तो अभी तक उनका ये सेवा यज्ञ चल रहा है। और मैंने कभी बोला नहीं है कि आप अपनी फीस बढ़ाइए, और बस बच्चे बराबर हुए और हम शांति से यहाँ पर आनंद से। कितने साल हुए आपके शादी के? कितने साल? आपको शायद आश्चर्य होगा, मेरी शादी को 48 साल हो गए हैं। हाँ, अभी 16 जून को 48 हो गई। 48 years. जब मेरे 17 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी। गुड, वेरी नाइस टू हियर दैट। बस आप सभी से मिलके, और संगीत का मुझे बहुत ये है, तो बहुत लगाव है। तो मैं इंटीरियर ऐसी प्लेस में भी मैंने अपना शौक चालू रखा है। और डॉक्टर साहब भी कभी कभी साथ देते हैं। मेरी एक सहेली थी, अंबुजा सीमेंट यहाँ पर है बड़ा प्लांट, वहां पर बेंगलोर से बिलोंग करती थी, डॉक्टर आशा रानी शामराव, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ी थी बेंगलोर में ही। और वहाँ की वो उनके समय की मिस किशोर थी। उनकी आवाज मोटी थी लेकिन बहुत ही अच्छी गायिका थी। और उनको 2000 सॉन्ग्स किशोर साहब के लर्न बाय हार्ट थे। तो जब अंबुजा, जब हमारे डॉक्टर्स का डिनर मीटिंग या कुछ होता था तो तब हम जब मिले तभी से बस एक संगीत हमारा वो हो गया कि जब भी मिले हमें गाना है। और उनकी आवाज बहुत बुलंद थी। और उनके पास में वो मेरे घर आई, उनके पास मैंने कराओके ट्रैक पहली बार देखा था। तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि अरे ये तो मेरा जीवन इसके साथ बहुत अच्छा चलेगा। तब यहाँ पर गुजरात में नहीं था ये कराओके का कुछ पता। तो उनके फिर मैंने सर्च, और वो आशा रानी जो अभी तो नहीं है, वो 92 से कैंसर से सर्वाइव कर रही थी। और अभी 3 साल हुए उनको चले। वो पहले जो हुआ उसके बाद 10 साल के बाद रिलैप्स हुआ, उसके बाद हर 6 महीने। और उन्होंने अपनी जीवन की 74 कीमो ली अपने जीवन के दरमियान। और फिर भी और उनके हस्बैंड तो बहुत, उनके बच्चे छोटे थे तब गुजर गए थे। तो संगीत उन्होंने लास्ट ब्रीथ तक संगीत गाया। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जब ये स्मार्टफोन आया, तभी से मैंने ये गाता रहे मेरा दिल, ये म्यूजिकल हमारा ग्रुप बना। बस उसमें 8-10 लोग थे। और तो बस उसी में वो हॉस्पिटल में उसका लास्ट ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वहाँ उन्होंने बड़ी धूमधाम से बर्थडे मनाया। 18 अप्रैल को उनका बर्थडे था और 6 मई को वो चल बसी। लेकिन हॉस्पिटल जो थी वहां पर उनके जो सब क्लासमेट वो ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह थे, उसने बिछाने में जब वहाँ कीमो ले रही थी फिर भी उसने वहां पर डिप्लोमा ये किया, ह्यूमन रिसोर्स काउंसलिंग का डिप्लोमा किया। और वो कैंसर के मरीज को और कैंसर के पेशेंट्स के रिलेटिव्स को वहाँ वो काउंसिल
फीलिंग भी कर रही थी। तो वो उन्होंने इतनी प्रेरणा दी है हमें, और लास्ट ब्रिज तक बस मैं बोला कि मैं आखिरी ब्रिज तक गाऊंगी, और उन्होंने इस तरह अपना जीवन यापन किया। तो और उन्हीं की याद में हम अभी भी ग्रुप को चला रहे हैं। बहुत बढ़िया। यही है। That is a wonderful way of giving respect. Thank you so much, Sarvaj. हाँ, आप सभी का बहुत आभार सुनने के लिए। हाँ जी। कोई बात नहीं। दीपक श्रॉफ जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप बताएंगे कैसे आपने पहली बार उनसे मिले? मेरी तो अरेंज मैरिज थी। मेरे डैडी को उसके नाना जी ने बात की थी, तो हम लोग मिले थे। अच्छा। माय वाइफ वाज 7 to 8 years younger to me, but she was very simple and I wanted a simple life partner, so we got engaged. दीपक जी, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? हाँ, वीडियो ऑन करेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू जी। So I wanted a simple and housewife, तो फिर हम लोगों की इंगेजमेंट हो गई। एंड इंगेजमेंट और शादी के बीच में 4 महीना था, तो those 4 months were golden days and we used to enjoy a lot. और ऐसे मैंने फिर उमरगांव में आई स्टार्टेड अ स्मॉल इंडस्ट्री, और उसमें 15 साल मैंने काम किया, और हम लोग घूमते फिरते थे। लाइफ वाज वेरी गुड फॉर अस। फिर चक्रव्यूह घूमता है, हम लोगों को पेरेंट्स लोगों और एल्डर ब्रदर्स लोगों के साथ में कुछ खटपट हो गई, तो फैक्ट्री भी बेचनी पड़ी। फिर घर लेके अलग रहना पड़ा, बच्चे भी छोटे थे, तो भी बच्चों की स्कूल वगैरह मैनेज हुई। मेरे इन-लॉज का थोड़ा सपोर्ट था। फिर मैंने कोलगेट की एजेंसी ली विच वाज नॉट सक्सेसफुल। फिर बस थोड़ा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी किया, बट लाइफ वाज स्ट्रगलिंग। आई कुड नॉट एस्टैब्लिश माई सेल्फ अगेन। देन आई पुश्ड माई वाइफ, बिकॉज मेरे हाथ से तो लॉस ही लगता था। तो वाइफ ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। शी इज वर्किंग विथ हर सिस्टर, और अभी मेरे 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की को तो जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है, तो आई टेक केयर ऑफ हर। और छोटी लड़की कनाडा में है। शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैरिड टू अ MBA। दे आर वेल सेटल्ड। ओके। अभी उसको लड़की हुई है, तो मेरी वाइफ वहीं गई हुई है। शी इज कमिंग बैक ऑन 6 अगस्त। अच्छा। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए फैक्ट्री बेचने के बाद, लेकिन बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ भगवान के बारे में भी जानकारी हासिल की। प्रवचन वगैरह सुनना मुझे अच्छा लगता है। स्पिरिचुअली थिंकिंग मुझे अच्छी लगती है। तो बस इन्हीं सब में थोड़ा बहुत किसी को हेल्प कर दिया, अपने हाथ से जितना निकलता है, बस वही साथ में जाने वाला है। बाकी तो कुछ जाने वाला है नहीं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो सब इधर ही रह जाने वाला है। करेक्ट। जो अपन किसी की मदद करेंगे, वही अपना बैंक बैलेंस क्रिएट होने वाला है ऊपर वाले के यहाँ पे। बहुत सही फरमाया। बस यही सोचते हुए मैं मेरी एल्डर डॉटर का केयरटेकर हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। वाइफ जॉब करती है, हम लोग अपना घर चलाते हैं। छोटी बेटी है, वेल सेटल है, अच्छी है। चलो, अच्छा है। और तो मेरी लाइफ में कुछ खास इंस्टेंस है नहीं। वेरी गुड। पता चलता है ना कि हाउ मच हार्डशिप्स वन गोस थ्रू इन वन्स लाइफ। हार्डशिप्स तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू आर वेल सेटल्ड, आपका तकदीर खराब होने वाला है तो झगड़ा होने वाला है। आप किसी की भी लाइफ में देख लीजिए, 4 पार्टनर है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, दे आर ऑल एंजॉयिंग। ऑल ऑफ अ सडन किसी के मन में ईगो आ जाएगा कि मैं ही सब कर रहा हूं, और झगड़ा चालू होएगा और चारों बर्बाद हो जाएंगे। सही बात। ये तो लाइफ की अप एंड डाउन है, विच इज कंट्रोल्ड बाय नेचर। नोबडी कैन डू इंडिविजुअली एनीथिंग। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मैंने जैन मुनि को सुना था कि अगले जन्म की क्या तैयारी करते हो। अगले जन्म की तैयारी के लिए मेरा हाथ जितना सरकता है,
मैं जितने भी गरीब लोग हैं, जैसे मेरे सोसाइटी के वॉचमैन हैं या हम लोगों के सोसाइटी के सफाई कर्मचारी है या कोई सड़क पे भिखारी मिल गया, whatever I can help, I definitely try to help them. That is what I can do. Excellent. And that is what I am preparing myself for my next birth. That is what I have gained from so much of pravachan which I have listened. Okay. बाकी तो न तो अगला जन्म किसी ने देखा है, but it is a faith कि if you do good, good people are going to come in your contact. Very true. Very true. And if you are doing 400 BC, only 400 BC people will come in your contact. वो चोर मुसेरे भाई की कहावत एकदम सही है. Yeah, you're right. चोर को चोरी पसंद आएगा और साहूकार को साहूकार के साथ ही जमेगा. बराबर. बस इसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, चल रही है. बहुत अच्छा है जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस. तो अभी एक ही जनाब बचे हैं, चंदेश बल्लाल. मैं रिक्वेस्ट मिस्टर चंदेश टू अनम्यूट एंड मिसेस चंदेश बल्लाल, प्लीज. Hello, Mr. Laxminarayan. I didn't come to speak about myself. I just came to hear everyone. First time I am listening to this open forum. Okay, so okay. I didn't really. Okay, no, there is nothing to be prepared about because nobody comes prepared. People just not a question of preparing. So you are expecting me to speak about your first meeting with your spouse. Okay. Because I got in halfway through. Mine was a purely arranged marriage. I am born and brought up in Kerala, and I had completed my master's and my MPhil, and I was preparing for my agriculture research service examination. And at that time, my husband, Mr. Ramkrishna Ballal, he's an engineer, born and brought up in Bangalore. So he was brought by another cousin of mine to my house in Palakkad. So we met there. Palakkad. I think you have some people over there because my sister-in-law's friend was saying they know you and Lalita very well. Okay. That's what I heard. So so we met, and in fact, I think we were poles apart. I was a very social kind of a person, having a lot of friends, and whereas he was more into reading and to be himself and doesn't waste his time. I like to spend my time just chit-chatting with people and minimum with books those days. But then I think we both came midway, and now he enjoys life a lot, and I am more into reading also. Wow. I think we have rubbed on each other, our characters, and we have 2 daughters. One is in Canada, and like Mr. Shroff was saying, she's a psychotherapist. Okay. She married her classmate, and she's there. And my younger daughter is a chartered accountant. She too married her classmate. She's in Bangalore, having her own practice. Wonderful. So now both of us are retired. And again, musing is my passion. And my husband, music and dance. I'm a dancer too. Oh, wow. Bharatanatyam, trained Bharatanatyam dancer. So my husband is nowhere near training or singing, but then he sits and watches. And my first, he encourages all 3 of us. My younger daughter is a professional singer, and my elder daughter is a professional dancer. Wow. So he encourages, and my sons-in-law also encourage a lot. So I think that's how I retired as the director of a national institute. If not for him, it would not have happened. Wow. He stood by me. He and his mother, they really stood by me. I had a lot of responsibilities. So arranged marriage also can take us a long way, and love marriage also maybe. That's what I have seen. Everywhere I think we have to make it work. Yes. Regardless of what.
Yes, yes, that's true, Mr. Laxminarayan. We have to come halfway. We should not be stubborn. And I had to go a long way because the life was totally different from what it was in my house. But then it was tough. Maybe for him also, it was very tough to handle me. But yeah, it was interesting to listen to Madam Sarla and Mr. Shroff. I think that's when I got in. Okay. It was very interesting. Incidentally, we have got Sita Jairam who lives in Canada, and she has today discovered that there are 2 more Canadians in this session. Exactly. I was listening to people, then I found, oh my God, why don't you pass on my number to them? I would love to meet them. I would love to be connected. Yes. Yeah, that's so nice, Sita. I met Sita in that Antakshari thing happened. Okay, the last virtually we met. Yeah. Yes. I just logged in thinking this will be interesting. I should see what is happening. And I just got back after a travel after a meeting. So I thought I'll just get in. And I found it very interesting, and I was, but it was a shock when I was called. Nice to like know. Laxminarayan ji said, I think 2 people, like Sarla ji's daughter, and who's my daughter. My daughter is in daughter, Canada. and Neeran ji's daughter. Shroff's daughter. Yes. Yeah. So please, you can pass on my telephone number to them. I can share it in the chat box, or Archana Yeah, can do it. you are there in that our Sita Bangalore. Sita ji, 1 minute. जी बोलिए. आप अपना नंबर मुझे लिखा दीजिए, मुझे जूम में से वो निकालना नहीं आता है. अच्छा, तो लिख लीजिए 416 831 2080. 2080. मेरी डॉटर सस्कातून में रहती है, वहां से वो ये नंबर से फोन करेगी तो आपसे बात हो जाएगी. हो जाएगी, लेकिन टाइम जोन डिफरेंट है, फिर भी चलेगा. अच्छा. 2-3 घंटा तो फर्क होगा. आप कहाँ पे हो? टोरंटो में हो क्या? टोरंटो में. यस, आई एम इन टोरंटो. Okay, I will tell her to contact you. Her name is Ritu Shroff. Okay. I'll watch out for somebody who called Ritu Shroff, who will be calling me anytime, sir. Okay, sure. Can you repeat your number, please, Sita? 416. Yeah. I will repeat the number: 4168312080. That's right. Okay. Yes, Chandish ji, 416. Yeah, someone has shared it already here in that is the Archana message. ji. Yeah. Okay. So nice. Thank you so much, Archana. Thank you. Nice. Yes, listening to all of please you. tell your daughter to contact me anytime, or you sure, want sure. to I contact me. will just now pass on the message to my daughter to get in touch with you, because she has just, it is 2 years she has been in Saskatoon. She is a physiotherapist, a neurophysio. So she also want to transfer to Toronto. Her husband is in shipping. Acha. He's in the shipping company. So if her husband can get a good job in Toronto, they would like to migrate from Saskatoon to Toronto, because in Saskatoon the temperatures are very extreme. And it's the only zone. It's the only zone where the time clock doesn't change all through the year. Okay. I will just send the details to my daughter, and she will get in touch with you within a day or 2. Please ask her to. In case she doesn't, I can contact her if you pass on her information to me. Anytime, sir. I will give you her number. You want to take down? You can put it in the chat box. I'll take it. Okay, I will put it in the chat box. Right. Righto. So that's my good. pleasure to connect with people. Yeah. Senior students. My pleasure to connect with your daughter to Chandish ji. Thank you so much. I'll message you separately. I've taken your number. Sure, please do. She's in Peterborough. Okay. Yeah, Which? it's about an hour from Toronto. It's called Peterborough. She's in Toronto, place. Which is easier. An hour from Toronto, but she's moving to Calgary next week. Oh, okay. Yeah. It's a beautiful place. Calgary is on the more towards the west. Yes. She's moving there next week.
Okay, Friday. okay. Yeah. Nevertheless, she can contact me over the telephone. We can Sure, always sure, Zoom and talk. Sure. Okay. Sure. Thank Thank you. you. Thank you so much. I think Seniors Today has been a great enabler to make people meet and come under one roof. So very nice. Correct. So I think it is past 6, so we should call it an evening. Thank you so much for being there, and I thoroughly enjoyed listening to all the experiences. Thank you so much. Good Thank night. you, Mr. Thank you Lakshmi. very Thank you much. all. Thank Thank you you all. everyone. Thanks for sharing your numbers. Thank you, Thank you. Laxminarayan ji. Thank Thank you. you. Thank you. Session. Thank you.